Okay, good morning to you all. I welcome all of you on this 80 Talks session number 14. नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत 80 Talks अशोक टावर टॉक्स के सेशन नंबर 14 में। आज हमारे साथ दो स्पीकर हैं फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन and both of them are faculty in Art of Living Foundation. I think most of you will know about Art of Living, but anyway, I guess they will introduce about Art of Living as well. So both we have two presenters today. Nandita Pai, who is a resident in Ashok Towers. She stays in Ashok Tower A. And her friend Pooja Tidke is also a faculty in Art of Living Foundation. So both of them will be taking the session today. They will talk through how we can improve our breathing for a better health. So I'll take 2 minutes to introduce both Nandita and Pooja, and then I'll request them to start their session. Nandita, who stays in Tower A, she is a qualified chartered accountant and a cost accountant who works in Deloitte since almost last 25 years or so. And she is a partner there, and she heads the practice of valuation and modeling there. And she is a qualified yoga teacher and very passionate about yoga and pranayam. And she has been associated with Art of Living since many years, and it will be great to hear from her. Then we have her friend Pooja Tidke. She is also has been associated with the Art of Living Foundation, and she has been conducting sessions since 2007 or so. She is a qualified lawyer and practices in Mumbai High Court, and she is a senior partner at Pranayam Law Associates, all services law firm with offices in Mumbai, Delhi, and Pune. So I welcome both of you, Nandita and Pooja, in this session. Thanks a lot for taking this session, and please start your session. So we will have this session for, I think, about 45 minutes or so. They will guide us through the pranayam, breathing, meditation, etc. And then in the last 10-15 minutes, we will have for any Q&A or discussion points. Thank you. Yeah, Pooja and Nandita, over to you. Thank you, Anil. And a very good morning to everyone here. Hi, Nandita. Good morning. Good morning. Hello, Nandita ji. Good morning. Good morning to everybody. So we were, like Anil ji said, we've been associated with the Art of Living for a long time. I first was introduced to it when I was 18 years old. I just finished my 12th standard exams and, were waiting for my results. So during my holidays, somebody in school, just sort of a school friend mentioned, there's this course on meditation. Do you want to go try it? So we just, out of curiosity, went and attended that program. In those days, it used to be a 6-day program. We were the youngest two in the batch. And I had a fantastic experience in terms of some knowledge that I learned, which put my life on a very positive path, broadened my horizons, increased my sense of belongingness with people, expanded my world to, beyond just my friends. And I've been practicing the techniques, the Sudarshan Kriya, especially, that I learned on the program since then. And 2007, about 8 years later, I trained to become a teacher. I started off teaching teenagers, the youth, 18 to 30 years. We had a program called the Youth Empowerment and Skills Program then, which is now been merged with the program for adults. So I taught all over the state, rural areas as well as the cities, youth from all backgrounds, and saw the transformation firsthand that they experienced in, really enriching their lives with so much confidence, so much positivity, so much more direction. And then thereafter, of course, now I teach a whole lot of other sections of society as well. So today's talk is,
it's meant to give us a slightly broader perspective on what we view as health and what we view as ourselves. Are we, just this body of maybe 5 feet, 5 inches, 6 feet? Is this just who we are limited to, or are we more than the body? Do we go beyond the body? And what is the depth of our existence? So Nandita and I are going to just very briefly take you through certain layers that we exist on. हमारे अस्तित्व के जो स्तर है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे. And then we will have some practical experience, थोड़ा practical भी pranayam करेंगे. We take you through some breathing exercises, a little bit of meditation, and then we could end with a question answer session to answer any questions that you may have. Does that sound good? Yes? Great. So it would be nice if we could make this an interactive session, since it's so personal and intimate. It would be nice to keep this interactive rather than just a one-way, monologue. And be nice to have everyone's cameras on as well, so that during the breathing sessions, we are able to really see whether you're doing. If you can turn your cameras on, please do. Great. So we'll start with just getting to know ourselves a little bit better. All of us exist on 7 layers. There are 7 layers to our existence. हमारे अस्तित्व के 7 स्तर हैं. So let's just talk a little bit about each layer and get to know what these layers are about and how they impact our overall health. So the first layer is the body. पहला जो स्तर है वो शरीर है ना. शरीर we are all familiar with the body, right? We are familiar on when does the body support us, when does the body not support us, right? So keeping the body clean, keeping the body healthy, giving it the nutrition it needs, keeping it fit, all of that is important for us to be free from disease, right? Yeah. So the first layer of our existence is the body. If the body is not supporting us, then there's nothing that we can do in life, right? So as long as we have the support of the body, life is great, moving on a positive track. The second layer of our existence, दूसरा जो स्तर है, वो है सांस. हमारी सांस, our breath. Okay? Of course, breath is vital. Because of the breath, we are alive. But there is lots more to the breath that we don't know about. An average human being uses only 30% of his or her lung capacity. हमारी जो फेफड़ों की कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है, हम सिर्फ 30% इस्तेमाल करते हैं. So through breathing exercises, प्राणायाम के द्वारा हम इस जो फेफड़ों की कैपेसिटी है उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं. और जब फेफड़ों की कैपेसिटी एक्सपैंड होती है, you will see that it has an extremely positive effect, not only on the health of your body, but on the health of all the other layers as well. The mind, the emotions, yeah, the way that you think, the way that you perceive situations, it starts impacting all of that. So we're going to explore a little more how we can really expand the capacity of our lungs. The third layer of our existence, तीसरा जो स्तर है, वो है मन. The mind. मन को तो हम जानते ही है, कभी कभी यहाँ रहता है, कभी कभी फ्यूचर में रहता है, कभी भविष्य में रहता है, कभी कभी पास्ट में रहता है. You may be attending this talk right now, but the mind may be in the kitchen or with the kids. Yeah, or thinking of a plan a dinner that you have to attend, or somebody that you need to speak to on the phone, है ना. तो मन तो भागता रहता है,
right? So मन को हम जब हमारा मन में जब बहुत सारा तनाव रहता है, उतना ज्यादा मन भागता है. When the stress levels are high, that much more the mind is constantly wavering between the past and the future. You are unable to stay in the present moment. जब तनाव कम होता है तब हम महसूस करते हैं ठीक है, अभी मन यहाँ है, शांत है, वर्तमान में है ना? होता है कि नहीं? So getting to know a little bit about the mind. What is the relationship between our mind and our breath? Can we use the breath to influence the mind? That's something that we're going to learn about in this session. Then the fourth layer of our existence is the intellect. बुद्धि. बुद्धि तो क्या करती है? डिस्क्रिमिनेट करता है, जो सही है क्या गलत है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए बुरा है. That power of discrimination lies with the intellect, right? But the intellect also gives us, it has this tendency to doubt. हम जब संकोच करते हैं या खुद के एबिलिटीज पे या दूसरों के कैरेक्टर पे या उनके एबिलिटीज पे, ये जो क्वालिटी है बुद्धि की, इसको हम कैसे कम कर सके, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सके खुद की. This is something that we can explore through the breath. Then moving on to the fifth layer of our existence, memory, yadash. So what do we hold on to more? Do we hold on to the positive more, or do we hold on to the negative more? What do you think? If somebody gives you 10 compliments and 1 insult, what will you remember more? Negative more. The negative more, right? So this is the tendency of the memory. So while the function is to collect information, to remember information, to you remember where you live, remember that don't touch a hot vessel, I'll get burnt, right? Remember your name. So the memory has a very powerful function in our life, and yet it has a tendency to collect and hold on to the negative experiences of our lives. So how do we get rid of that trauma that the memory collects? We have all gone through traumatic experiences, maybe at a personal level, at a professional level, at a society level. Through the pandemic, there must be so much that each one of us has gone through, right? And all of that trauma that is collected in the memory needs to be released, right? So how do we release that trauma so that the memory does not become that storehouse of negativity? What happens when it becomes a storehouse of negativity? Everything that we see around us, we start seeing through a filter of negativity, right? The mind tends to become cynical, our perception tends to become negative, then the approach starts becoming negative, right? And then after a point, we focus more on the negativity rather than the positivity, right? So this is all a function of the memory. So allowing the memory to release traumatic or negative experiences in life is an important aspect to health, both emotional as well as mental, right? Then moving forward to the 6th layer of our existence. The 6th layer is the ego. We all have an ego, right? Sometimes it is good for us, sometimes it is not so good for us. So learning about the ego, generally the tendency is to think that ego is what? It is a sense of superiority. But is it really? It is also a sense of inferiority, right? Anything that makes us feel separate from the other person, anything that takes away our sense of belongingness, that is the hardening of the ego, when the ego becomes a liability rather than an asset.
So what is a desirable ego? A desirable ego is an ego that includes all, जो सबको अपने में समेट लेता है. वैसा अगर अहंकार हो हमारा, then we're moving in a positive direction. But in an ego that excludes people, right, that makes you separate from the people around you, that is an ego that is taking you in a negative direction. So how do you transform this ego to bring it, to soften it, so that you move forward together? Yeah? That is something that can be influenced through your breath. Of course, it has such a huge impact on our health, right? Yeah, the harder the ego, yeah, the more you will experience stress, emotional, which will then translate into diseases of the body, whether they are arthritis or back pain or spondylitis, cancer, all of that. Yeah? All of these are all functions of imbalances within these 7 layers of our existence. Then the last layer is the layer of the soul, Atma, the self. So that is the most subtlest layer, and yet it is the most powerful layer. Right? So what is good health? Having a disease-free body, a quiver-free breath, an inhibition-free intellect, yeah? A trauma-free memory, an ego that includes all, and a sorrow-free soul, a soul that is free from sorrow. If we can move in this direction, you will see automatically you start thriving in your health, whether it is mental, whether it is the level of the body, whether it is emotional. Yeah? And when you are healthy in all of these aspects, everything thrives around you, your relationships, your career, your profession, your contribution to society. You become a lighthouse of knowledge and energy to the world around you, and become an asset to the world. So I'm going to request Nandita to take us through some knowledge on the breath and then some breathing exercises to help us really experience how the breath can transform each of these 7 layers of our existence. Thank you very much, Pooja. That was really insightful. Namaste. आप सभी लोग जो यहाँ हैं सुबह, who have taken time out today morning to listen to us. तो जैसे कि पूजा, हम ज्यादातर स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो हम फिजिकल बॉडी, यानी कि हमारे साथ क्या अच्छा नहीं हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं. लेकिन देखो ना, हेल्थ सिर्फ शारीरिक स्तर पे नहीं है, पर वी हैव 7 लेयर्स. हम 7 स्तर पे जीते हैं. हर स्तर भगवान ने हमें दिया है ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हर स्तर का एक स्वभाव भी रहता है जिसके कारण हम इल हेल्थ या डिजीज महसूस करते हैं. तो क्या करना चाहिए? 7 स्तर पे अगर हमको हेल्थ मेंटेन करना चाहिए, तो अगर मुझे ये मोबाइल भी उठाना है तो मुझे क्या चाहिए, आप बताइए. व्हाट डू आई नीड इवन इफ आई हैव टू पिक अप अ मोबाइल, इवन इफ आई हैव टू पिक अप अ पेन. खाना भी बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? व्हाट डू आई नीड? आई नीड एनर्जी. आई नीड एनर्जी. इसको संस्कृत में ऊर्जा कहते हैं. आपने देखा होगा कि कभी कभी आप सुबह उठते हैं और ऐसा लगता है आज तो मुझे राजा या रानी जैसा महसूस हो रहा है. सबको स्माइल भी देते हैं, लिफ्टमैन को, रिसेप्शनिस्ट को, दूध वाले को भी स्माइल देते हैं. लेकिन कभी ऐसे हम उठते हैं, शायद नींद बराबर नहीं है, शायद खाना बराबर नहीं खाया, तो कैसे चिड़चिड़ाहट महसूस होता है. और कोई भी आके आपका बटन दबा ले और क्या होता है, वी लूज कंट्रोल. हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं. तो जैसे ऊर्जा की मात्रा हाई हो जाती है तो हम 7 स्तर अच्छी तरह से यूज करके ऑप्टिमली लिव कर सकते हैं. लेकिन जैसे ऊर्जा की मात्रा कम होती है, ये जैसे बैंक बैलेंस है, जैसे ऊर्जा का बैलेंस कम होता है हमें, तो द वे वी लिव चेंजेस, राइट. तो ऊर्जा कैसे मेंटेन करते हैं, इसके
4 सोर्सेज हैं और आज हम एक सोर्स पे फोकस करेंगे। तो वो 4 सोर्सेज क्या हैं? पहले तो खाना। जब भी ऊर्जा चाहिए तो बॉडी क्या सिग्नल देती है? कुछ तो डालो अंदर पेट में। अच्छा, कैसा खाना चाहिए हमें? यू नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट? जो भी राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी। इसके बारे में ज्यादा हम ये कोर्स में सिखाया जाता है क्योंकि आज वक्त कम है, हम इस पे ज्यादा जोर नहीं देंगे। द सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी इज स्लीप। कभी कभी जब हम थक जाते हैं तो शरीर को खाना नहीं चाहिए। शरीर क्या कहता है? बस सो जाओ, लेट जाओ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो क्या होता है? ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है। अच्छा, अगेन कितना सोना चाहिए? आज संडे का दिन है, मैं 10 बजे तक नहीं उठूंगा। नो, हर रोज हमारी नींद की मात्रा बदलती रहती है, बट यूजली द राइट क्वांटिटी एंड द राइट क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर्स। तो ये हो गया दूसरा स्तर, सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी। द थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि पूजा ने एम्फसाइज किया, वो है अपनी सांस, आवर ओन ब्रेथ। Why is breath so important? आपने देखा होगा कि जब हम पैदा हो गए, वो डॉक्टर ने हमें माँ के पेट से निकाला, उन्होंने वो अम्बिलिकल कॉर्ड काट लिया और क्या किया हमने? पहला एक्ट क्या किया? जन्म लेके हमने एक गहरी अंदर सांस ले ली और रोए हम। यस, व्हाट इज द लास्ट एक्ट ऑफ आवर लाइफ? इट इज हम सांस छोड़ेंगे और इसके साथ हम, हमारे पास जो लोग हैं, जैसे हमने जिंदगी जी है वैसे वो हमारे लिए रोएंगे या नहीं रोएंगे, राइट? द फर्स्ट एंड द लास्ट एक्ट ऑफ अ लाइफ इज द ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। और हर अंदर और बाहर जाने वाली सांस, इसके बीच में जो होता है इज व्हाट वी कॉल लिविंग लाइफ। लेकिन मैं मानती हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्रेथ है। क्यों? अगर हम खाना नहीं खाते थोड़े दिन के लिए तो जी पाएंगे ना? यस, पीपल फास्ट फॉर इवन 30 डेज। ये नींद नहीं निकाला, 2-3 दिन नींद नहीं आई, ठीक है, वी आर स्टिल सर्वाइविंग। पर अगर विथ ट्रेनिंग ऑल्सो हम 2 मिनट से ज्यादा सांस नहीं रोक सकते। दूसरी बात, आपने देखा है जब आप क्रोधित हो जाते हैं तो आपकी सांस कैसी चलती है? शॉर्ट एंड फास्ट, और शरीर ठंडा गर्म। जब आप दुखी होते हो तो सांस कैसे होती है? थकी, मरी, लेथार्जिक। और जब घर में अच्छा सा राजमा करी बना है तो आप कैसे सूंघ लेते हैं? फुल लॉन्ग डीप ब्रेथ आप लेते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे मन की स्थिति वैसे वैसे सांस की स्थिति। लेकिन क्या हमने सोचा है कि ये रिवर्स भी कर सकते हैं? हम सांस को इस्तेमाल करके मन को वश में लेके आ सकते हैं। और किसी ने कहा है, सिर सलामत तो सब कुछ सलामत। So this is the third important source of energy. And the fourth important source of energy is a calm meditative mind. आप देखेंगे जब भी आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो मन कैसा होता है? जब आप दूसरे की निंदा करते हैं तो मन कैसा होता है? जब आप एक अच्छा पोयम पढ़ते हैं तो मन कैसा होता है? एक सुरीली आवाज सुन के मन कैसा होता है? सो अ काम मेडिटेटिव माइंड, जब भी आप ध्यान करते हैं तो कैसा होता है? मन वर्तमान में होता है, भूतकाल में नहीं, भविष्य काल में नहीं। तो ये जब भी आपके साथ कोई ठीक नहीं महसूस करते हैं, आपको सिर्फ 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे फोकस करना है। लास्ट 48 आवर्स में क्या मैंने ठीक खाया है? क्या मैं ठीक सोया हूँ? क्या मैंने मेरा प्राणायाम किया है, सांस के ऊपर ध्यान दिया है? क्या मैंने ध्यान किया है? ये चारों पे डिपेंड होता है आपका एवरीडे हेल्थ। ठीक है, टुडे वी विल फोकस ऑन द ब्रेथ। तो हम थोड़ा प्राणायाम सीखें। डू यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया? एंड लेट्स सी फॉर आवरसेल्फ कि मन उसके बाद में कैसा है। तो पहला प्राणायाम हम सीखेंगे भस्त्रिका। कैन एवरीबडी सी मी क्लियरली? ठीक है, तो भस्त्रिका करने में थोड़ा सीट पीछे लेती हूँ सो यू कैन सी मी। देखिए मेरा शोल्डर्स है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, कंफर्टेबली स्ट्रेट, पूरा इतना टाइट करने की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबली स्ट्रेट, शोल्डर्स स्क्वायर, हल्की सी मुट्ठी हल्की सी टाइट नहीं। और ये देखिए मेरा अंगूठा बाहर की तरफ है, मेरा फिस्ट यानी कि मेरी मुट्ठी कैमरा की तरफ है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं।
ठीक है, तो ये पहला स्टेज है। और कोहनिया शरीर के पास, ऐसे नहीं, बाहर नहीं, हल्की सी मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनिया शरीर के पास। ठीक है, ओके सोफा, वॉच मी। हम साधारण सांस से करेंगे, इसको कहते हैं भस्त्रिका। सांस अंदर लेते हुए मैं हाथ ऊपर ले जाती हूँ और पंजे फैलाती हूँ। ठीक है, पंजे खुले हुए। सांस छोड़ते हुए हल्का सा फोर्स लगाएंगे और फिर हल्की सी मुट्ठी, बैक इन पोजीशन। एक बार करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। साधारण सांस लेते हुए सांस अंदर और हल्का सा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, एवरीबडी क्लियर? तो वी विल डू दिस फॉर सम काउंट्स, और जब काउंट बंद हो जाएगा तो ऐसे रिलैक्स, विश्राम करें। आप क्या करेंगे, आप अपने घुटनों पे या जंघा पे हाथ महामुद्रा में रखेंगे। सॉरी, यू विल कीप योर हैंड्स लाइक दिस, इसको महामुद्रा कहते हैं, इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट दैट यू कीप इट लाइक दिस। और तभी आप देखेंगे कि अंदर, आपके अंदर क्या हो रहा है। हाँ, क्या क्या व्हाट महसूस हो रहा है, कुछ हो रहा है, मन कैसा है। तो ध्यान सांस के ऊपर रखेंगे और मन में क्या हो रहा है उसके और रखेंगे, इस पे हम ध्यान रखेंगे। सो जस्ट लेट्स टेक पोजीशन फॉर भस्त्रिका। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, कंधे विश्राम में, मुट्ठी सामने की ओर, कोहनिया शरीर के पास। एक लंबी गहरी सांस लेंगे अंदर और बाहर। साधारण सांस में भस्त्रिका साथ करेंगे। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर। ब्रीथ इन आउट, इन आउट। हाथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ब्रीथ इन आउट, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out। आंखें बंद रखते हुए हाथों को विश्राम में ले आइए। हथेलियां खुली हुई, हथेलियां आकाश की ओर, अपने घुटने या जंघा पे हाथ रखें। Pay attention to the state of your breath and the state of your mind. शरीर में जो भी संवेदना हो रही है इसके प्रति सजग हो जाएं। आंखें बंद ही रखें। आंखें बंद रखते हुए फिर से हाथों को पोजीशन लें, हल्की सी मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनिया शरीर के पास। हम एक बार और रिपीट करेंगे। पहले एक साधारण सांस अंदर, पूरी तरह से छोड़ दें। एक साथ भस्त्रिका। ब्रीथ इन आउट, इन 2, इन 3, इन 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15। विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें। हथेलियां घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। ध्यान सांस के ऊपर, मन की स्थिति के ऊपर। शरीर स्थिर।
जब भी मन करे धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Whenever you feel comfortable, slowly and gradually, you may open your eyes. How is the mind now? Better than when you started the talk? Better than when we started the talk? हम दूसरा और एक प्राणायाम सीखते हैं, ये शायद बहुत सारे लोग जानते हैं। इसके लिए हमें ये बीच वाली उंगली और तर्जनी भुवों के बीच में रखेंगे। The ring finger and the little finger on your left nostril, thumb on the right nostril. इसको दबाना नहीं, इसको हल्के से रखना और ये दो उंगलियां भुवों के बीच में। दूसरा हाथ जो है आप ये मुद्रा लगाएंगे, यानी कि ये तर्जनी और अंगूठे वाली उंगली, the tips of your index and the thumb touching each other lightly, the other three fingers straight. इसको आप अपने घुटने पे रखेंगे, खुली हुई हथेली। ठीक है, तो राइट हैंड, दायां हाथ ऐसे और बायां हाथ ऐसे। पहले देखिए, करने से पहले दोनों नासिका से सांस अंदर लेंगे और फिर close the right nostril and release from your left. Breathe in from your left. Close the left, breathe out from your right. Breathe in from your right. Close the right, breathe out from your left. एक बार ये पूरा साइकिल एक साइकिल होता है। आई विल गाइड यू, लेकिन हम ऐसे 3 या 5 साइकिल करेंगे। ये पूरे साइकिल में मैं आपको गाइड करूंगी। इसके बाद आप दोनों हाथ खोल के ऐसे महामुद्रा में घुटनों पे रखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे एंड वी विल कंटिन्यू इनटू मेडिटेशन। ठीक है, तो पोजीशन ले लें। लेफ्ट हैंड लाइक दिस ऑन योर थाइज, दायां हाथ इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर भुवों के बीच में, रिंग एंड लिटिल फिंगर ऑन योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, थंब ऑन योर राइट नॉस्ट्रिल। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दोनों नासिका से सांस अंदर। Close your right nostril, breathe out through your left. लंबी गहरी सांस, breathe in through the left, breathe out, close the left, open the right, breathe out through the right. दाएं नासिका से सांस अंदर, close the right, breathe out through the left. Breathe in through the left, close the left, breathe out through the right. Breathe in through the right, close the right, breathe out through the left. Breathe in through the left, close the left, breathe out through the right. Breathe in through the right, close the right, breathe out through the left. हाथों को विश्राम दें, दोनों हाथ महामुद्रा में, दोनों हाथ जंघा या घुटने के ऊपर, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी।
एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। ध्यान ध्यान वातावरण की ओर ले जाएं। वातावरण में जो भी आवाजें हो रही हैं उसके प्रति सजग हो जाएं। ट्रैफिक की आवाज, चिड़ियों की आवाज, घर में अलग अलग आवाजें, पंखे की आवाज, अपने खुद की सांस की आवाज, सभी आवाजों का स्वीकार करेंगे हम। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। Take your attention to your body. ध्यान शरीर की ओर ले जाएं। पैरों के तलवे, टखनियां, your ankles, घुटने, your knees, जंघा, your thighs, कमर, your hips, जननेंद्रिय, your genitals, your whole lower body. एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए विश्राम महसूस करें शरीर के निचले हिस्से में। Now let's take our attention to our abdomen. पेट की ओर ध्यान ले जाएं। पेट, छाती, पीठ, कंधे, दोनों भुज, दोनों हाथ, your neck, front of your neck, back of your neck. एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। The body is the most beautiful gift given to mankind. ये हमारी जिम्मेदारी है इसको स्वस्थ रखना। Body is a temple. सिर के चोटी से पैरों के तलवों तक पूर्ण विश्राम। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। ध्यान
विचारों की ओर ले जाएं। अच्छे विचार, बुरे विचार, जैसे भी हमारे विचार हैं, इस वक्त उनका स्वीकार करेंगे। Accept all thoughts as they are. फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। ध्यान अभी भावनाओं की ओर ले जाएं। Take your attention to your feelings. Pleasant feelings, unpleasant feelings. जैसे भी भावनाएं हैं, उनका स्वीकार करेंगे। Accept all your feelings as they are. A deep breath in and exhale. You are peace. You are joy. आप ही प्रेम हो, आप ही शांति हो। सभी तरह का प्रयास अभी छोड़ दें। Let go of all your efforts and just be. धीरे से ध्यान फिर से भावनाओं की ओर ले जाएं। Take your attention back to your feelings.
विचारों की ओर ले जाएं। Take your attention back to your thoughts. शरीर की ओर ले जाएं। Take it back to your body. वातावरण में जो भी आवाजें हो रही हैं उसके प्रति सजग हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें और उसे धीरे से छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और उसे छोड़ दें। अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते हुए जब भी आपका मन करे अपना समय लेते हुए धीरे से आंखें खोल सकते हैं। टेकिंग योर ओन टाइम। Whenever you feel comfortable, slowly and gradually you may open your eyes. How is the mind now? Calmer. Calmer. Much calmer than we started, right? Very peaceful. तो देखिए हमने प्राणायाम शायद 5 मिनट किया होगा। 10:36 we started meditation. It is 11:36 we started meditation. It's 11:52 now. We have meditated for almost 10 to 12 minutes. Did you feel time pass away? Yeah. So you see, हमने थोड़ा सा ध्यान दिया सांस के ऊपर और ध्यान के ऊपर, बट द माइंड इज calmer. तो इसमें एक सीक्रेट है, देयर इज सम सीक्रेट, और ये आप पे है. हमने तो सिर्फ आपको एक, जैसे कि आइसक्रीम का फ्लेवर चखा है ना, वी हैव जस्ट गिवन यू अ फ्लेवर, लेकिन इसको एक्सप्लोर जरूर करें. 2 चीज मैं मानती हूँ इज अ गिफ्ट नॉट जस्ट टू इंडिया बट टू मैनकाइंड. एक है योगा और एक है आयुर्वेदा. अगर हम, जो हमारे पूर्वजों ने, ऑल आर ऋषिज मुनीज, हाँ, इन्होंने इसको कंपाइल करके एक साइंस बना के हमें दिया है, और if we don't make use of it, then really it's a loss to us. So it will be nice if you can explore, yoga. And yoga क्या है? Yoga is not yoga asanas only. Yoga includes जो भी आप करते हैं ये मन को बचाने के लिए, उसको योग कहते हैं. जो भी anything that unites the mind, मन को वर्तमान में लेके आता है, इसको योग कहते हैं. And it includes yoga asanas, it includes pranayam, it includes meditation, it includes ayurveda, it includes all the aspects. अगर हर एक एस्पेक्ट को हम टच करते हैं तो हमारे सातों स्तर जो हैं, हाँ,
ये जो पूजा ने कहा हमको, आवर बॉडी, शरीर, सांस, मन, चित्त, Intellect. बुद्धि, अहम और स्वाहा, सोल, Ego. ओके, ये हम ऑप्टिमली यूज करते हैं हमारे जरूरतों के लिए। जो उनका स्वभाव है वो उसमें नहीं जाता, देन वी कैन लिव optimally, and that is the objective na, to live beautifully, that is the art of living. तो हमारा कोर्स होता है, we do a course once every month in Ashok Towers. इस कोर्स में हम प्राणायाम में गहरी तरह से जाते हैं, ध्यान में गहरी तरह से जाते हैं, and we keep announcing the course. If you're interested, please do join. महत्व, it's important to note, ये कोर्स की जो भी आप डोनेशन देते हैं, it goes for all the seva activities of the art of living. हमारे more than 100 schools हम run करते हैं free of cost in the आदिवासी regions in India. और इन स्कूल, इनकी ट्यूशन फीस, इनकी स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स, स्कूल बस, क्योंकि अगर हम बस नहीं भेजते, इनके माँ बाप इनको खेतों में काम कराने लगाते हैं. सो ऑल दिस डोनेशन दैट यू स्पेंड फॉर नॉलेज गोज बैक इनटू नॉलेज. और इनकी नॉलेज से उनकी जो बढ़ोता होता है, उसकी मेरिट आप तक पहुंचती है. सो आई वुड अर्ज यू ऑल, जहां भी आप प्राणायाम लर्न करना चाहते हैं, जहां भी ध्यान लर्न करना चाहते हैं, प्लीज do learn and make use of the gift, God-given gift to India. So with that, our session is over. Pooja and I are open to questions. अगर आपके सवाल हो, we have 4 more minutes. I had told Anil ji हम 15 मिनट Q&A के लिए रखेंगे, but this topic is only so interesting और हम इतना बांटना चाहते हैं, we want to share so much of our own experience, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, really apologize for that. पर जो भी आपके प्रश्न है, we are happy to answer. अच्छा, सभी, आपका शरीर यहाँ है, सांस भी यहाँ है, मन भी यहाँ है. Is your mind also in the moment, or mind is still traveling somewhere? कितना चंचल है ये मन. Monkey mind. Okay. So we're open to questions. अगर आपके सवाल हैं, तो we would love to answer them. हाँ, पूर्वा जी आप म्यूट पे हैं. नंदिता, जो आप हाँ जी. एक बार करती हैं, मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग का पुराना एसोसिएट रहा हूँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया है थोड़ा सा, लेकिन आई वुड लाइक टू रिजॉइन, अगर आप हमको बता सकें तो. I will. So I think second week of February में 10 से it's a 4-day course, 2 घंटा प्रतिदिन. आपको हम 2 टाइमिंग रखते हैं, सुबह का और शाम का, क्योंकि लोगों की कन्वीनियंस देख के. और आप कौन सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. We are a group of faculty members who teach. ये कोर्स करने के बाद हर वीक हम फॉलो अप भी, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. और अगर आपको ये कोर्स भी रिपीट करना हो, सो देन ऑल्सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. अभी ऑनलाइन हो रहा है, ये सब सिचुएशन देख के हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. बट वंस इट ओपन्स अप, वी हैव ऑफलाइन कोर्सेज ऑल्सो, विच इज इन पर्सन कोर्सेज, बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज. आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं. नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर आप हफ्ते में जो भी करती हो, मैंने तो कोर्स किया हुआ है. हाँ, so you can join the follow up. तो उसके डिटेल्स अगर मुझे मिल जाए तो I will send it to you, Purvar ji. Thank you. Pooja ji, can I ask a question, Pooja? Yes. Pooja ji, you talked about negativity in the beginning. So how to stop or overcome ruminating about negativities or past traumas or whatever? I mean, how we keep on rethinking, ruminating about negativity. So how we can overcome? Of course, meditation and those things, but continuous sort of ruminating about negative things. Right. So there are two limbs to help you move out of negativity. One is through knowledge, and the other is through breath, and both of them go hand in hand. So when we say knowledge, keep reminding your realizing that events are not
permanent. Whatever events have passed, they're in the past, they're not true anymore. So being able to see the past as a dream. And in fact, Adi Shankaracharya said, see the present also as a dream. ये जो भी हो रहा है around us, it is all a happening, right? Right now, what is happening around us, this particular talk also now is a happening. So we can see the past as a dream, the present as a dream, then it stops affecting you so much, right? And you can be more in the present. So training the mind to be in the present. One is through knowledge, constantly catching yourself. You know, ये जो अभ्यास होता है, वो उसमें थोड़े हम अगर लगे रहे, मन को जब भटकता है उसको पकड़ के वापस वर्तमान क्षण में आप अगर लेके आ सकते हैं, ये थोड़ा अभ्यास आप जब चालू करेंगे ना, you will see it's so fascinating. You can make friends with your own mind. Yeah? And then the mind starts listening to you rather than you listening to the mind. So this is one, through study, through knowledge, and the other is through breath, through these techniques. So like Nandita ji was saying, breathing techniques, the Sudarshan Kriya that you learn on the program, these are all techniques that help you bring the mind back effortlessly. So what breath does is it cleanses the impressions in your mind. So the more you practice these techniques, you will see that automatically without effort, just by practicing the technique itself, automatically the impressions in the mind start getting cleansed. So the negativity starts falling off on its own. Then what is left is only positivity, right? So it's like bringing light into a dark room automatically dispels the darkness, right? So it's a beautiful phenomena. So if you use both these together very effectively, you will see that your mind starts moving away from the negativity, and your whole approach turns around into a positive one. Okay, Does it mean more of oxygenation and hemoglobin, which reaches to the brain and works better? Ultimately, breathing is more oxygenation. Yes. So these are all byproducts of the practices. The higher oxygen levels, your general health will be better. You will notice that आपका अगर आज whatever your level of health is, you just practice it for 40-50 days continuously, you will see there'll be a complete change in आपके जो स्वास्थ्य है, it'll be completely different. So oxygenation, higher energy levels like Nandita ji spoke about, lots of more positivity, more focus, clarity in the mind. These are all multiple byproducts to the practice. दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया था वे बैक व्हेन आई वाज इन पटियाला. उसके बाद मैं स्टेट बैंक का चेयरमैन भी बना और 4 साल रहा. उसके बाद भी फुल टाइम काफी साल तक काम करता रहा. अभी भी पार्ट टाइम काम करता हूँ. मेरे एनर्जी लेवल्स अभी भी बहुत हैं. जिनके प्रैक्टिसेस हैं वो मैं रोज करीब करता हूँ, 1 घंटा डिवोट करता हूँ. और मेंटल एक्टिविटी लेवल और फिजिकल एक्टिविटी लेवल में पिछले 25 साल से कोई परिवर्तन नहीं आया है. Now I am running 76, but I feel as fit as if I was 45 or 50 in almost all my activities. इसका बहुत पॉजिटिव असर है. ये बात दूसरी कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग रेगुलरली नहीं अटेंड कर पाता, लेकिन इसकी प्रैक्टिसेस मेरी रोज करता हूँ. ये बहुत ही फायदेमंद है. See, physiological age is different than biological age. Right, I'm a doctor myself. Yeah, you're right. 75 can work as 57. Just the reverse. Not 57. Make it 45. 45. Well, yeah. I am 83 and therefore I'm thinking about 38. Good to hear that. आपने सही बात कही, मैं इसको याद रखूंगा.
Thank you, Mr. Purvar, for sharing your experience. Anybody else? Any question? Any discussion point you want to raise? So, Nandita, I have one question. You mentioned Sudarshan Kriya is basically what? What we did was Prastika plus Anulom Vilom plus meditation. Is this Sudarshan Kriya? So what we did was different kinds of pranayam. And one of the kind of pranayam is the Sudarshan Kriya. What is the Sudarshan Kriya? It is a rhythmic breathing pattern, okay, that is taught in the Art of Living courses, the practice of which helps you to eliminate the stresses at each and every layer of your existence, okay, and helps you to empowers you. I wouldn't use a very tame word like help. It empowers you to take care of your mind. So there are, of course, physical benefits and many other benefits, but the most important benefit it helps us is it empowers us to take care of our mind and our emotions. Because when the going is good, it's so easy, right? But when it is, can you be the same calm person when the going is not so good? Is what is the determination of your success? Can you still smile when the going is not good? That is the true sign of success. And as Pooja says, right, it is our mind listening to us rather than us being a victim of our mind. So that is what it empowers you to do. तो ये रोज करने से it just trains the mind again and again to be in the present moment, and it helps you to respond rather than react. आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, not only you are empowered, you become a circle of influence for others around you. लोग आपको देख के परिवर्तन खुद महसूस करेंगे. जब भी वो आपके कंपनी में आएंगे, then they will feel better, they'll feel good, because the goodness is coming from inside. And all of us have it inside, but because of the various things, our memory, intellect, जो भी कचरा जमा है ना अंदर, we can't see it. So the breath helps to cleanse it again and again, eliminate all impressions till it shines out. So we all have it, but ऐसा है ना, पैसे बैंक में पैसा होने से कोई मतलब नहीं है. चेक लिख, you should know how to write a check. चेक सीखना चाहिए, चेक कैसे लिखना चाहिए, तो हम वही करेंगे. We are learning to write the check so we can tap the wealth which is inside us. So that is the Sudarshan Kriya. It's one of the most powerful breathing techniques on this planet, is my personal experience. I have personally experienced a lot of transformation. मैं ऑफिस में लीडरशिप पोजीशन में हूँ. There are a lot of stresses, but the most important stress is to deal with other people's minds, and it has helped me a lot in the office. घर में बात अलग है, वो husband wife के बीच में है. Great, thanks a lot. So, but I must compliment both the ladies. In fact, I have been a part of it. They have presented things extremely well. My compliments to Pooja ji and Nandita. Nandita I know very well, of course. Both of them have done an outstanding job today. All the very best. Excellent theory and the practical, both. Thank you very much. It was indeed very, very good. So it was a great session, both Pooja and Nandita. Thank you. I see Dr. Nilesh. He's come after the session. मैं आपको पकड़ूंगी, Dr. Nilesh. So it was great. I had something else going on which just got over, but I wanted to definitely listen to you, and I will definitely listen to the recording. And Pooja is also here. I know Pooja as well, so I'll definitely listen. And I see Anilji's father also. Namaste. I meet him every day morning. I meet so many people every day morning, including Kasliwalji. But thank you for attending the session. It just motivates us that we are ourselves on the right track, and so much to learn from each and every one of you. Pooja, you have anything to say? No, I just like to thank everyone and just share that this was a lovely way to spend the Sunday. Thank you, Nandita and Pooja. I wanted to say thank you.
I've never Thank you. succeeded in getting even 1 minute's meditation done. I always said it's beyond me. Today I've come close to getting something like meditation. I'd like to join your classes. Thank you. We will keep you posted, Hema ji. Thank you. Anil ji, thank you so So- much for agreeing to give us, for giving us permission to have this conversation. No, Really, come I'm on. grateful to I have you. no one to give permission. Thanks a lot for joining, doing this session for all of us. It is a great session to make us realize that we are not tools of our mind, but mind is our tool. And that's how we should live. But Anil, sorry for interrupting. We must organize these kinds of sessions more often. Sure, sir. That's all I'm saying. Sure. So I thank all the participants for joining today's session. Next session we are going to have on 6th of February at 11 o'clock. And in that session, we have a global hospitals doctor who is going to teach us about CPR. The cardiac thing, cardiac practice as a life skill, which all of us, every individual should know about CPR, how to take care of cardiac emergencies anytime. So please join on 6th of February. Thank you very you. much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you very much. Thank you, Nandita. Bye. Bye. Thank you. Thank you all.